Hello everyone, welcome to you all once again. The good news for you if you are a medical doctor, want to practice in abroad. So you already know we provide assistance for US, UK, in Australia. But now the good news here, we can also help you if you want to work in Gulf countries, whether it is Saudi Arabia, Oman, Qatar, Bahrain, or any other country like UAE, Dubai, mein, wherever you want to work as a GP, so we can help you. So if you are a medical doctor, आपने MBBS किया हुआ है, want to work in this country, so we can help you. There are so many advantages to migrate in this country. So first I want to share that there's a tax free salary, no tax, whatever you will earn you can save a lot of money. And most of the times में बहुत सारी जगह पर जो है accommodation भी फ्री दी जाती है डॉक्टर्स के लिए. And you also eligible to apply golden visa in UAE. So ऐसे बहुत सारे advantages to migrate and in these countries. I basically highly recommended for two type of people can migrate these countries. First of all, आपका पास में इतना expenses नहीं है to bear for Australia. Australia need at least around 5 to 8 lakh rupees, while here 2 लाख में आपका entire process हो जाएगा, including your each and everything. And secondary, आप जिसको जो है English is the main problem. They are not able to secure like the 7 band in IELTS, or PT or OET. So they also can go to the Gulf countries. So you will see if you are a medical doctor, you need to write this SMLE exam for Saudi Arabia, and there's no work experience required. You just completed your MBBS, and the major thing is here. I want to show here in Gulf countries and Australia or other countries, where you must be a registered RMP in your home country. Then only you can start process for Gulf countries. But अगर आपने home country में रजिस्टर नहीं किया FMGs, or if you are, then you can go to Australia. Okay. तो MBBS नो वर्क एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड. बट हियर यू कैन सी ये जो है एग्जाम ड्यूरेशन होता है 6 आवर्स का. एंड देयर आर द 100 प्लस 300 क्वेश्चन आते हैं. एंड यू नीड टू स्कोर एटलीस्ट 67% मार्क्स. 67% मार्क्स रिक्वायर्ड टू पास दिस SMLE एग्जाम. एंड मैक्सिमम अटेम्प्ट यहाँ पे मिलते हैं 3. ओके. एंड इफ यू वांट टू माइग्रेट ओमान, अगर आपने MBBS किया हुआ है, and Oman required minimum 5 years of work experience. Saudi Arabia required zero work experience, and while Oman required 5 year working experience. And then here if you can see here 2 hours का जो एग्ज़ाम है. एंड यहाँ पर जो है एक एग्ज़ाम जैसे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा. This is a no negative marking, basically. So you can give from your home country, and once you pass this exam, then you need to secure a job in Oman and go there. And once your employer will help you to appear in the interview. And if you can clear this, then you are eligible to practice in Oman. Okay. And 65% marks चाहिए होंगे to pass this exam, and 3 attempt होते हैं. And again, if you want to work in UAE, तो अगर आपको MOH, DOH और MOH, ये 3 एग्जाम होते हैं, वो आपको पास करने होते हैं. MBBS प्लस 2 वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. 2 hour 45 minute का जो है टाइम होता है. 100 क्वेश्चन आएंगे यहाँ पर, और 60% मार्क्स 3 अटेम्प्ट रहते हैं यहाँ पर. सिमिलरली अगर आपको जो है हाथ DOH और हाथ देना है जिसमें पहले हाथ था, अभी DOH कर दिया गया है. तो अगेन सिमिलरली 60% मार्क्स वहाँ पर भी चाहिए. तो UAE में 60% मार्क्स, MBBS प्लस 2 ईयर का वर्क एक्सपीरियंस चाहिए. इफ यू वांट टू माइग्रेट कुवैत, वहाँ में MBBS 2 ईयर का एक्सपीरियंस चाहिए. एंड 60% मार्क्स 3 अटेम्प्ट है यहाँ पर. तो कतर का ही वही है, MBBS प्लस 2 ईयर एक्सपीरियंस. So generally, if you want to migrate in any country, so Qatar, Bahrain, so academically can help you to complete your entire process, your data flow. You will provide you with the coaching, live classes, study material. So easily you can pass this exam in your home country. Will also help you in your CVB and cover letter preparation and job application, all those things also. So if you are MBBS doctor, जीरो एक्सपीरियंस पे आप अप्लाई कर सकते हो फॉर सऊदी अरबिया. 5 ईयर एक्सपीरियंस पे जाएंगे आप जो है ओमान में. रेस्ट ऑफ द कंट्रीज में रिक्वायरमेंट है 2 ईयर वर्क एक्सपीरियंस आफ्टर योर MBBS यू कंप्लीट इन योर होम कंट्री. ठीक है. एंड these are the things. So academically here to help you all. If you have any other questions, please leave a comment below. So these are new courses academically ने launch किए हैं. And right now is एक scholarship test मिलेगा आपको. scholarship test attend कीजिए. Based on that you can also secure scholarship. And thank you so much and see you. Bye.